Hey guys, I welcome you all to Warrior Tech YouTube channel. So guys, this is very first video on technical stuff on my channel. So I'm starting with the data electronics subject first, and I feel this will be very useful for Btech students and students who are preparing for exams like EKT. That's a particular examination for becoming a tech officer in Air Force, and for GATE. Okay, so the topics that I will be covering in the course will be the basics, that is this video only, Boolean algebra, number system, combinational circuits, sequential circuits, and logic families. Like this manner, we will proceed further in these next videos. So firstly, let's understand what's the difference between analog and a digital circuit. Analog, as the name suggests, it contains so many values at a particular time period, whereas the digital signal is having only two values, 0 and 1. Analog signal contains analog circuit. If we want to distinguish between the two digital and analog circuit, we can simply see that analog circuit will be having so many amplifiers and BJT and diodes, whereas a digital circuit is having gates, logic gates, counters, mugs, etc. These are the digital components. Okay, analog signal looks like this curvy wave, and our digital signal look like this 0 and 1. There's a wave of 0 1 0 0 1 1 1 like this. So many of you will be having doubt here, abhi bhi samajh nahi hai. Okay, let's understand it with a practical example. If we see, the analog signal is having so many values at a particular time period, right? And digital signal is having only two values. So if I want to say that analog signal looks like this regulator for a fan, and digital one is like a switch for this fan. So now I think you will be getting something. I'm having a liberty to use this regulator at a particular value to increase the speed of my fan and decrease the speed of the fan. There are so many values right here. But if I consider this switch, there's no liberty to me. मेरे पास कोई फ्रीडम नहीं है कि मैं फ़ैन को किस स्पीड पे रन कर सकता हूँ. आई एम हैविंग ओनली टू वैल्यूज़. या तो मैं इसको ऑन करूँगा या तो ऑफ़ करूँगा. सो दिस इज़ लाइक डिजिटल सिग्नल एंड दिस इज़ लाइक एनालॉग सिग्नल. राइट नाउ लेट्स मूव फर्दर. अब ये जो प्रोसेस है ना, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये काफ़ी टाइम पूछा भी गया है EKT एग्जामिनेशन के अंदर कि विच प्रोसेस लीड्स टू विच थिंग. ओके, अब जैसे देखो, पहले एनालॉग सिग्नल दिया हुआ है. इट्स क्वाइट अ वेवी स्ट्रक्चर, राइट? आफ्टर सैम्पलिंग इट वॉज कन्वर्टेड इनटू डिस्क्रीट सिग्नल. अब ये डिस्क्रीट सिग्नल क्या होता है? इट्स काइंड ऑफ एनालॉग सिग्नल ओनली, बट हैविंग लेस वैल्यूज़ कंपेयर टू एनालॉग सिग्नल. इसके अंदर काफ़ी सारी पर्टिकुलर वैल्यूज़ आ गई, जैसे डिस्क्रीट वैल्यूज़ आ गई है. 0.7, 1.6, 2.3, 3.3, 4.3. Now if I want to make a digital signal out of this, I have to quantize it. Now what is quantization? Let's say यहाँ पर 0.7 दिख रहा है मुझे, 1.6 दिख रहा है, 2.3 दिख रहा है. अगर मैं चाहूँ तो मैं इसकी वैल्यू रिड्यूस कर सकता हूँ और इनको एक ही लेवल पे ला सकता हूँ. तो एक ही लेवल पे लाने के लिए मेरे को राउंडिंग ऑफ करनी पड़ेगी. 1.6 को और 2.3 को मैं राउंड ऑफ कर सकता हूँ नियर बाय 2, एंड 0.7 को कर सकता हूँ मैं 2 1. Okay, so like this I'm reducing the values and reducing the components. I am actually giving them a same value. Like 1 को मैंने 2.7 से डिनोट करा है, 2.3 को मैंने 2 से करा है, 1.6 को भी 2 से करा है, like this. and 3 को मैंने 3.3 से करा है, 4 को मैंने 4.3 से करा है. In this manner I got only 4 values, 1 2 3 and 4, and these 4 values are encoded and converted into digital signal. Like there are 4 values, I'm having very ease to convert them into digital signal like 0 0 0 1 1 0 1 1. If they are more than 4, then I will be using 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 like this. Okay, so I think you will be having some idea now कि how the things are done. Analog signals से digital में कैसे आते हैं. Okay, now let's move further. So what are the advantages of digital signals? What's the need of studying digital circuits and system and all? So let's understand this. Firstly, there are less noise problems compared to analog signal, and it is very easy to detect the errors at the receiver end because we are having so many error correcting and decoding techniques we have at the receiver end. It also saves memory in computers where analog signals are not compatible. अब ये क्या है? Let's say analog signal like this. It is having so many values at a particular time instant that it will fill up the memory with the very less content. Whereas our digital signals are having only few values, and few values को काफ़ी values को represent करने के लिए we have few codes.
तो उनको हम इजीली यूज़ कर सकते हैं मेमोरी के अंदर। एंड दैट्स व्हाई यू हैव सीन दैट कंप्यूटर्स के अंदर हमेशा एनालॉग सिग्नल यूज़ नहीं होता, हमेशा डिजिटल सिग्नल यूज़ होता है। डिजिटल सिग्नल्स एंड डिजिटल सर्किट्स आर मोर प्रोमिनेंट इन कंप्यूटर्स, नहीं तो वो काम ही नहीं करेंगे, मेमोरी भर जाएगी फटाफट, तो क्या फ़ायदा उस चीज़ का। अब जो डिजिटल सिग्नल्स है वो काफ़ी डिजिटल सर्किट्स जो है वो काफ़ी पर्टिकुलर रीजन, दे आर कॉस्ट इफेक्टिव एज वेल एज यू कैन डिज़ाइन दैम एट अ वेरी लो साइज़। अब जो इंटीग्रेटेड चिप्स होती हैं उसके अंदर सारे लॉजिक गेट्स होते हैं, सो दीज आर डिजिटल सर्किट्स, so this can be fabricated at a very small area, small size, so this is very useful compared to analog circuits. So these are some of the advantages. Okay, so this is all about the basics of digital circuits. So if you like this video, please share, subscribe and hit the bell icon for further notifications. Like this, we will be covering all technical subjects and that will be useful for all you guys, right? So Jai Hind.